Today, For the Love of Food takes us to Balochistan, the largest province of Pakistan. The forbidding terrain makes for very strong and fiercely independent people in this area. Due to a lack of tourist facilities beyond Quetta, this is not the easiest place to visit. However, what lacks in resources in Balochistan is made up for by the hospitality and generosity of its people. Due to their fiercely independent character, the Balochis have historically proved to be very difficult to invade. Even when the British arrived as early as the 1800s, it took them till 1887 before they could declare all of Balochistan as part of the British Empire. This resilience in their character has further been strengthened by their nomadic lifestyle. Most Balochis tend to migrate up to the hills in the oppressively hot summer months, when temperatures can go up to 50 degrees Celsius. Conversely, when the temperature drops to a bone-chilling minus 22 degrees in the winter, the same people move back with all their belongings to the plains. You are what you eat. So the Balochi food and their cooking methods have also adapted to their lifestyles. There's a strong reliance on freshly hunted meat, basic spices such as salt, and a minimal reliance on any form of utensils. Enough food trivia from me. Let's turn to the expert on this, Mr. Khalid Mahmood, who has been running his own Baloch food restaurant for the past 16 years. Balochi खाने के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर है आपने रेस्टोरेंट में साल चलाया, आप मुझे बलोची खाने के बारे में कुछ बता सकते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ होता है बाकी पाकिस्तानी खानों से? इसमें कोई बहुत कम आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये वैसे ज़्यादातर इसमें साल्टिश ही होता है, नमक ही इसमें यूज़ किया जाता है, स्पाइसी नहीं होता है। अच्छा, और कोई ख़ास तरीके पकाने के? रोटी एक वहाँ का ट्रेडिशनल है। एक तो चपाती है, तकरीबन वो तवे पे बनती, वो तकरीबन 2 से 2.5 फीट की होती है। तो उसके अलावा एक फंक्शन पे जो पिकनिक वगैरह पे वहाँ रोटी यूज़ की जाती है, वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बोल्डर्स गोल, उस पर वो पूरा वो आटा लपेट के उसे कोयलों के ऊपर वो प्लेट एक होती है, रख के उसे बंद कर दिया जाता है। अच्छा। वो कुछ देर बाद तैयार हो जाती है, तो उसे जब खोलते हैं, वो जिस तरह तरबूज खुलता है, जी जी, इस तरह वो खुल जाती है, तो उसे यूज़ करते हैं। और जो है ये मैंने देखा है जहाँ भी गोश्त को इस्तेमाल होता है उसकी हर हिस्सा इस्तेमाल होता है। जी हाँ। तो आप लोग दुम्बे के गोश्त के साथ और क्या करते हैं, या उसकी दुम्बे के इसके साथ इसके सजी में तो इसके दुम्बे के सारे पीसेस लेग इसके अलहदा कर दी जाती है, दस्ती अलहदा, पुठ अलहदा, गर्दन और चांपे इकट्ठे टुकड़ों की शक्ल में, काफ़ी बड़े टुकड़े होते हैं, 2 kg का, 3 kg का, उसे जो है ना वो लगा दिया जाता है सलाखों में। चावल के साथ कोई आप लोग चीज़ें? चावल भी खाए जाते हैं, लेकिन जो इसको चावल भी ज़्यादातर वहाँ पे इससे एक डिश बनती है, फुल लैम्ब या मटन की होती है, साबत दुम्बा या बकरा होता है। अच्छा। और उसमें जो है ना राइस वगैरह उसके पेट में डाल के और उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल के उसे खड्डा सजी भी कहते हैं, खड्डा कबाब भी कहते हैं। यहाँ उसे इन्होंने दम पुख्त का नाम दे दिया, लेकिन असल इसका जो ट्रेडिशन नेम है वो खड्डा सजी या खड्डा कबाब ही है। अच्छा। वो नीचे एक घड़ा वगैरह बना होता है, उस पर वो चादरें लगी होती हैं, उसके अंदर हल्की हीट होती है, उसके अंदर उसे रख दिया जाता है 3 to 4 आवर्स, 4 घंटे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तैयार होता है और वो साबत ही उसे जो है ना फिर ट्रे में सर्व कर दिया जाता है, और उसके राइस जो हैं उसी मटन के साथ, लैम के साथ ही फिर वो खाए जाते हैं। तो खालिद साहब, सजी जो है एक बहुत पॉपुलर चीज़ है बलोची कल्चर की, जो हर जगह मिलती है, हर शहर में मिल रही होती है, तो उसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताएंगे आपकी, कहाँ से शुरू हुई? इसकी हिस्ट्री जो है, आप अगर जिसे कहते हैं कि जी पत्थर के ज़माने से जब इंसान पैदा हुआ है, ये इसकी हिस्ट्री उसी वक्त से शुरू हो गई थी। इंसान ने शिकार किया, उसी टाइम उसे किसी लकड़ी में, किसी चीज़ में वो ज़िबा करके, परो के, उसी टाइम आग पे उसे जो है ना बग़ैर किसी चीज़ के, मसाले के, उसी टाइम उसे रोस्ट करके खा लिया। तो So that's all very interesting, hearing about the origins of Balochi food. Let's go now and take a look at how this food is actually made. Hint for you, the very popular Saji is also on the menu. So considering we learned a lot of the food history from Mr. Khalid Mahmood before this, now I have Fayaz Saab here with me, who is going to help me and oversee me make some
Balochi Kadhai. Now, Kadhai is a pretty big staple of any Pakistani cuisine. It's always interesting to see the different variations that Kadhai has depending on the region. So, इसके अंदर हम अब तेल की जगह चर्बी लगाएंगे. चर्बी डाल दें. कितनी चर्बी? ये सब डाल दें. सारी डाल दो. सब डाल दें. And then we wait for the oil to be released from this fat. I'm actually a huge fan of the fat of this lamb because it tastes really yummy, but a lot of people have a tough time sort of adjusting to it. अब इसका जब oil निकलेगा तो उसके बाद जब oil निकल जाएगा फिर इसको कितने ये गोश्त कौन सा इस्तेमाल किया आपने इसके अंदर? ये दुम्बे का लैम गोश्त. दुम्बे का. और कौन से हिस्से का होता है सारा? ये दुम्बे का कोई लेग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. लेग और पुट ज़्यादा इस्तेमाल होता है. और इसके अंदर हम कोई ज़्यादा मसाले नहीं, सिर्फ नमक? नहीं, इसमें सिर्फ नमक डालते हैं और टमाटर भी इसमें बहुत कम डाले जाते हैं. नमकीन कढ़ाई होती है, ये बिल्कुल साल्टिश होती है और इसमें कम टमाटर बहुत कम इस्तेमाल होते हैं. सिर्फ जायके के लिए डालते हैं हम लोग. और हरी मिर्च और अदरक थोड़ी सी डालते हैं. ये भी सिर्फ जायके के लिए डालते हैं. So the use of tomatoes and chilies and even ginger comes right at the end once the meat has actually had a chance to absorb the salt and the fat from the animal itself. Oh wow, this is really good actually. इसे भी डाल दें. इसमें 200 ग्राम जो है चर्बी होती है, बाकी 800 ग्राम गोश्त होता है. So it's sort of a 8:2 ratio, 8 parts meat, 2 parts of fat. It's quite a bit of fat, but I'm totally ignoring that fact right now. It's important to allow the fat to be absorbed by the meat itself, so that once we throw in the salt, which I'm going to do now, throw in the salt, it blends together pretty well. Salt कितना आप अंदाज़? 1 चम्मच डाल. बस 1 चम्मच. 1 चम्मच का हाथ से डाल दें. ये कितनी देर तक इसको आप कहेंगे कि हम पकाएंगे? ये तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे. 40 मिनट गोश्त गलने में? गोश्त गलने में 35 मिनट लग जाएंगे. So I have another kadai over here that we've just sort of used to put on top to cover it. Wow, I was really scared I'm gonna tip this over. टमाटर इसके ना ये किस तरह से आप शेप क्या होगा आपका? इसका ये हम लोग ये काट देते हैं ये क्योंकि इस कढ़ाई में गलता नहीं. इसको सिर्फ सेंटर से 2 करके ये पीसेस करके डाल देते हैं. फिर ये गल जाता है, छिलका इसका निकाल लेते हैं हम लोग. टमाटर ये छिलका किस तरह से निकालते हैं? जब ये अंदर चला जाता है ना, थोड़ा सा गल जाएगा तो छिलका इसका निकल जाएगा, खुद ब खुद ही निकल जाता है. और छिलका निकाल के अलग बाहर फेंक देते. बाहर फेंक देते हैं. जी. उसकी क्या वजह है मगर? छिलका अच्छा नहीं होता. नमकीन कढ़ाई में छिलका टमाटर का नहीं आता. अच्छा, और इतना टमाटर काफ़ी होती है? बस ये काफ़ी है. What's interesting to note is that because Balochistan is neighbored by Afghanistan and Iran, the influences that Balochi food has from these countries is pretty strong as well. So just the use of minimal spices, just such as salt. I mean, a lot of Afghani cuisine as well has only salt used in it. And even the use of garlic, and not just garlic, the crushed water of a garlic, that you'll find in Afghani cuisine as well as the cuisine you have over here in Balochistan. Another interesting sort of cuisine dish that they have is the landit. It's a winter sort of dish because what they do is they'll take a whole animal, whether it's the lamb or a goat, and hang it in a shaded room, just in room temperature and almost like in cold temperatures, and allow the meat to get dried, and that dried meat actually lasts a very, very long time and can be used over and over again, and you can sort of preserve it and eat it for a long period of time. चलिए ये तो कट गए. इसका अदरक जो है हम लोग बनाते हैं. So that's another thing about Balochi cuisine that I've noticed is that it's all very basic and very sort of, they don't use any machinery for sort of cutting their vegetables or even sort of mincing the meat. It's all very, very sort of get the animal, cut it up, skin it, cut it up, throw it together with vegetables that you find around or any 1 or 2 things, chop it very roughly and throw it all together. और हरी मिर्च किस तरह से काटेंगे फिर? हरी मिर्च इस तरह गोल मिर्च काटेंगे. ये हरी मिर्च मैं आपको
The ingredients may follow a minimalistic approach, however, the colors are anything but bland. The slow cooking method ensures that colors and flavors are retained. We remove the skin of the tomatoes towards the end when it slips off easily. Before we move on, we leave the kadhai to simmer with the lid on, allowing the meat to cook gently on a slow fire. So now we are with Fayaz Saab, who is going to show us how to make the ever popular Saji right here. Saji ke liye we've got raw chicken right now with the skin on. That's the most important part. And Saji, you'll see, made a lot with lamb or mutton. But because I think it's more economical, generally Saji in restaurants these days is served in its chicken form. तो अब शुरू करें, आप बताएं हमें किस तरह से इसको बनाएंगे आप? सब्जी को पहले पानी में धोते हैं, इसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं, पहले पानी में वॉश करके उसके बाद हम इसको नमक लगाते हैं। अच्छा, इसको अंदर की तरफ नमक लगाते हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे, ये जो आपने खाल इसकी उतारी है, इसका कोई तरीका होता है इसे कट करने का या किस तरह से कट करते हैं? हाथ से इस तरह करते हैं इसको जी। ये इसकी खाल निकल रही है, हाथ से निकालते हैं, कोई छुरी इस्तेमाल नहीं, यहाँ से खाल से हाथ रखते हैं और ऐसे करते हैं, ये हाथ से निकल जाती है। अच्छा, निकलने के बाद फिर हम लोग आप नमक लगाएं इसको, ये स्किन के अंदर तक नमक। और कितना नमक आपने कहा, कितना नमक डालते हैं इसके अंदर? इसमें 3 चम्मच लग जाता है। अच्छा, तो पूरी अंदर ऊपर बाहर? अंदर बाहर, फिर स्किन के बाहर भी लगाते हैं इसको नमक। बस ऐसे? बस। अब ये जब बनेगी ना सजी, तो इसको मैं कहूँगी कि मैंने बनाई है, क्रेडिट मुझे जाएगा। ठीक है, बस और लगानी इसके अंदर। मैं ज़रा डर के लगा रही थी क्योंकि कच्ची थी, मगर ठीक है। चलिए, तो कितना आपने कहा नमक इसके अंदर कितना डलता है? ये में 3 चम्मच डाल देते हैं इसमें। 3 चम्मच। अब इसको क्या करना है हमें? अभी इसको हम लोग डंडे में लगाते हैं जी। इसका डंडा यहाँ पहले इस टांग से भी निकालते हैं जी। ये दूसरी टांग यहाँ से, फिर इसका यहाँ से सीधा निकालते हैं सेंटर से बाहर। और ये जहाँ से गर्दन के उससे निकालते हैं? ये बस ये डंडे में अभी फिट हो गया, ये निकलेगी नहीं जितनी भी। So generally this is the sort of more traditional way of making saji on the spit, but you now see in restaurants the rotisserie on which the chicken is made. That's the modern version of making the saji. अब इसको बस आग में लगा देते हैं। हम इसको आग में लगाएंगे। अच्छा, चलिए दिखाएं इसको किस तरह से लगाते हैं जी। अभी हम लोग इसको अपनी तरह आग में लगाएंगे। I wouldn't suggest trying this bit at home. You might ruin your garden, but if you have the time and if you have the space, I think it's a great way to sort of entertain guests in a different way. तो बस इसको लगा दें, तो कितनी देर तक ये तैयार? ये तकरीबन 2.5-3 घंटे की बात है। जी, 2.5-3 घंटे तक। ये आस्ता स्लो में, ये आस्ता हीट लगी जी, स्लो तेज़ हीट में नहीं रखते, फिर ये इसकी स्किन जो है जल जाती है। Keep watching because this is the saji that I'm going to take credit for once it's done. My patience is tried as the chicken takes its own sweet time to cook. I really hope it turns out to be worth it. Saji is not just limited to Balochi restaurants and in fact is quite popular at wedding feasts, restaurants and bazaars across Pakistan. So on an average it takes about an hour and a half to 2 hours for one full chicken to be roasted and for the saji to be ready to eat. And now that's done, let's go take a look at how this saji has turned out. चलिए दिखाएं, हम निकाले ये सजी। हो गई? जी हो गई। इसको आप टच करके नहीं पता करते दूसरी गली है या नहीं? पता होती है आप लोगों को? पता चल गया ना, अभी हो गई। ये देखिए आप, ये काट जी। तो ये क्या चीज़ है? कटर? ये कटर है इसका, सब्जी काटने का। इसको किसी और छुरी वुरी से नहीं काट सकते? नहीं, छुरी से नहीं काट सकते। और ये मिलता किधर? बाजार में, आम बाजार में मिलता? बाजार में मिल सकता है। So saji traditionally is something that's eaten from the times of hunters and gatherers, when all you did was hunt the meat, marinated it in just a little bit of salt, and just throw it into the ground or onto a fire to roast it. Clearly, no one is hunting any chickens these days, but this was used for mutton and other forms of wild animals.
since I am a white meat fan, मैं ये इसकी यहाँ से कोशिश करूँ. सबसे मोटापे वाला हिस्सा होता है ना, this is the most fattening, the skin, but oh well. Wow. You can't even tell that the only thing that they've used to marinate this is salt. I could swear I can taste other flavors in this, but really, really good. And really juicy. I'm surprised it didn't dry out on the open fire over there. Finally, my entire meal is ready and I choose to steer clear of the windy weather outside and enjoy my food in peace. Good thinking on my part, as I needed to do justice to the phenomenal Saji and Kadhai. As expected, the flavors were very subtle and the true taste of the meat dictated the meal. Considering chicken has played a starring role on our show regularly, I figured it was worth our while to do some research on this white meat. So now that you've seen how chicken is made, and I've stuffed myself with really yummy saji out there, let me tell you a few things about chicken. Chicken, I think, is the most maligned meat in Pakistan. With the bird flu rumors and rumors of hormone use in chicken, people tend to sort of stay away from chicken given certain periods of time. However, it's still one of the most popular meat forms used in Pakistani cuisine due to its price. It's much cheaper than mutton and beef. This wasn't always the case. Chicken was part of the cottage industry back in 1963 up to the early 60s. People used to sort of grow male chickens and keep them for slaughtering, and female chickens were kept protected for laying eggs. This all changed thanks to Pakistan International Airlines and Shaver Poultry Farms from Canada, who combined to start this booming industry of chicken farming in Pakistan. The government quickly jumped in on the profitability of this and realized that, wow, chicken can actually bring in a lot of money for the country, and decided to inject a lot more money in terms of tax exemptions and import, and sort of laxed restrictions on imports. The production of chicken doubled in the 80s, and now we sort of get chicken much cheaper than you would have gotten it back in the day. So this is the part where I make myself feel better about eating all this chicken. Chicken is actually a very, very healthy form of meat. It's the best way to get your highest form of protein without getting any carbs in your diet. Not saying that you shouldn't have any carbs, you can supplement it with a chapati or so, but generally whenever I'm going through sort of a health phase, I'll just throw in some chicken with salt, pepper, and lots of yogurt and just put it on the stove. No oil. It turns out to be such a great dish, just like a quick snack or a quick dinner alternative. Now a little bit of facts about chicken. Chicken meat is not fatty at all if you just eat it without the skin on. A 6-ounce chicken breast, which is about roughly a cup, 170 grams of chicken, has about 240 calories with only 4 grams of fat. Now, if you were to eat it with the skin on, the same chicken breast, 6 ounces, would have 340 calories with 14 grams of fat. So all the fat lies in the skin. You want to eat healthy? Eat the chicken without the skin. So now that you've learned how to cook different cuisine, Balochi cuisines, we sort of ate a semi-healthy meal with the chicken, like I told you. And yes, so the kadhai had a little bit of fat, but I'm not going to dwell on that. Join me next week when I take you again on a journey to learn something new about a different culture in Pakistan.